अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं थोड़ा सा पानी पी रही थी तो इट्स ओके। तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। तो मेटाफिजिकल पोइट बाय टी.एस एलियट ऐसे द मेटाफिजिकल पोइट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1921 and it's considered an important work of literary criticism. In this essay, Eliot discusses the nature and characteristics of the metaphysical poets, a group of 17th century poets who were known for their intellectual and complex style. Samuel Johnson used this phrase metaphysical in the 18th century, and T.S. Eliot popularized and raised in the 20th century. Eliot essay on the metaphysical poets was first published as a review of J.C. Gerson edition of Metaphysical Lyrics and Poem of the 20th Century. Dr. Johnson's definition about metaphysical poetry is the most heterogeneous ideas are yoked violence together. डॉक्टर जॉनसन डजंट लाइक मेटाफिजिकल पोइट्री, वो मेटाफिजिकल पोइट्री को पसंद नहीं करते थे. टी.एस. एलियट मेन पर्पज इज दैट ही वांट टू रिकंसिडर एंड अप्रिशिएट द पोइट्स ऑफ 17th century ड्यू टू their uniqueness combination of reason and feelings in their works. In this essay, Eliot uses the phrase dissociation of sensibility and unification of sensibility. They are very important in literary criticism, and these forms get from all over the world. Samuel Johnson said that metaphysical poets are very useless. They don't know how to write anything. Samuel Johnson criticize करते थे metaphysical poets को. वो कहते थे कि नहीं पता इन्हें कैसे लिखना है, ये useless हैं. All of their work are useless. The reason behind it was that poet मिक्स अप एवरीथिंग, वो हर चीज़ को मिक्स कर देते हैं, इसलिए वो यूजलेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ वैलिडिक्शन बाय जॉन डन इन दिस ही कंपेयर लव विद द पेयर ऑफ कंपासेस. टू कंपासेस जो हम यूज़ करते हैं, लाइक प्रकार जिसे कहते हैं. एंड द वर्क ऑफ द जॉन डन आफ्ली द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स हु was made by the critic Samuel Johnson to describe the loose group of 17th century. Samuel Johnson write Life of Abraham Cole, by when T.S. Eliot read it, he disagreed with the work of Johnson. Then Eliot wrote a work called Metaphysical to defend metaphysical poets and poetry. According to Samuel Johnson, weak point of metaphysical poet is that they mixed everything. Then T.S. Eliot said that this weakness is the strength of metaphysical poet. वो कहता था कि ये एक weakness है कि वो चीज़ को मिस कर देते हैं, लेकिन T.S. Eliot ने कहा यही weakness उनकी strength है. According to Eliot, metaphysical poet had some characteristics that set them apart from earlier generation. Eliot admired their ability to merge thought and feeling, to blend the intellectual with emotion. Like then college used unification of sensibility. According to them, poetry made through थॉट एंड फीलिंग्स. मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं वो थॉट प्लस फीलिंग को मिक्स करते थे, तो उसको कहा वो इक्वल था यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी के. फॉर एग्जांपल, अ फ्ली बाय जॉन डन. एक वक्त में वो लोग थॉट और फीलिंग को भी एक वर्क में इम्प्लीमेंट करते थे, लेकिन कभी कभी थॉट को करते थे, कभी कभी फीलिंग. तो उसको कहते हैं डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी. अगर एक ही वक्त में दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो उसको कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. अगर एक ही वक्त में अलग अलग चीज़ें एक एक टाइम पे यूज़ हो रही हैं तो उसको कहते हैं डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी. Dissociation of sensibility is opposite to unification of sensibility. In dissociation of sensibility में मेरी भी जुबान लड़खड़ाने लगी है. Both thought and feelings are kept separate. T.S. Eliot said that association of sensibility is not only in Donne and Cole work, it also in Elizabethan dramatists like Shakespeare, Webster. Then Milton and Dryden came, and their work was unhealthy because they used this association of sensibility in their work. 17th century तक थॉट एंड फीलिंग्स को इकट्ठा यूज़ किया जाता था अपने वर्क्स में, लोग यूज़ करते थे. क्लासिकल एज आई, उसमें सिर्फ थॉट को यूज़ किया गया. फिर रोमांटिक एज आई, उसमें फीलिंग को यूज़ किया गया. फिर विक्टोरियन एज आई, उसमें थॉट को यूज़ किया गया. फिर मॉडर्न एज आई, उसमें थॉट एंड फीलिंग दोनों को यूज़ किया गया. T.S. Eliot द वेस्टलैंड, आप लोग इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें थॉट एंड फीलिंग दोनों को यूज़ किया गया. डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, द फैक्ट इज दैट आफ्टर डन एंड हर्बर्ट अ चेंज कम ओवर द माइंड ऑफ इंग्लैंड. द पोएट लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ थॉट एंड फीलिंग. द यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज लॉस्ट एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कम आफ्टर 17th century, and now again in modern age unification of sensibility come. Eliot shows a close relationship between the age of Donne and the modern age. He shows the sensibility of the metaphysical and the modern poets. Metaphysical are difficult, and the poet of modern age want to be difficult. Conclusion: Donne and the other metaphysical are in a direct current of English poetry, and the modern poets are in their descents. इसको कहते हैं descendants. इसको कहते हैं औलाद. DESCENDANTS.
आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, PDF इसका प्रोवाइड कर दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।